Dear students, now let us look at the logistical relationships. कुछ डिस्कस किया है हमने पिछले सेशंस में. That is about the independent scenario. That was a single transaction scenario, conventional channel structure, conventional channel relationship towards dependency. Dependency में you had the partnerships and alliances, you had joint ventures with you, you have contractual arrangements with you. रिलेशनल वॉलंटरी अरेंजमेंट्स की बात की थी ओवरऑल हमने. यहाँ पर लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस के लॉजिस्टिक्स रिलेशनशिप कितनी तरह के हो सकते हैं. वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर दैट देयर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, वर्टिकल रिलेशनशिप्स एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स. So vertical relationships are these refer to the traditional linkages between firms in the supply chain, such as retailers, distributor, manufacturer, and parts and material supplier. So supplier, manufacturer, retailers, distributor, retailers, or if any other party is involved in that. So we call it the vertical channel or vertical relationship. Horizontal relationship, that would actually include those business arrange agreements between firms that have parallel or cooperating positions in the logistical process. जब आप horizontal की बात करते हैं, let's say there are 3 retailers in my relationship. So that means those 3 retailers could have the horizontal relationship as well. Or let's say I have 2 manufacturers, मैं outsource करता हूँ किसी अपने item को. तो उस आउटसोर्सिंग के लिए इफ आई नीड सम अदर मैन्युफैक्चरर विच मे बी फ्रॉम सम स्पॉट मार्केट, तो वहां पर वो मैन्युफैक्चरर इज एक्चुअली आई एम क्रिएटिंग अ हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप विद दैट, बिकॉज नाउ इन दैट चैनल स्ट्रक्चर देयर आर 2 मैन्युफैक्चरर्स एट द सेम लेवल. तो व्हेन यू हैव अ रिलेशनशिप एट द सेम लेवल विच इज पैरेलल, देन यू विल से इट्स द हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप. Okay, the logistical relationships, it actually ranges from a vendor to strategic alliances. ये एक जनरल सिनेरियो है जिसको हमने डिस्कस करना है, जिस पर एम्फसाइज करना जरूरी है. We have discussed that your relationship, channel relationship would be transactional, जहां पर सिंगल ट्रांजैक्शन हो सकती है. ये कन्वेंशनल सिनेरियो. लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इज क्रिएटेड, बट at the same time the power structure is not lying with any of the channel member. Explicit भी नहीं है और implicit भी नहीं है. Explicitly भी वो market में customer base को control नहीं कर रहा, और implicitly channel members किसी एक channel player को, channel member को follow नहीं कर रहे. So both parties in a vendor relationship are said to be in arm's length. हम start लेंगे vendor के scenario से. तो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन आपके पास ट्रांजैक्शनल सिनेरियो से स्टार्ट लेंगे. सो देन वी कुड हैव द पार्टनरशिप और द कोलैबोरेटिव सिनेरियो. द रिलेशनशिप सजेस्टेड बाय पार्टनरशिप इज वन which 2 or more business organizations cooperate and willingly modify their business objectives and practices to help achieve long-term goals and objectives. So, जब आप सप्लाई चेन कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली यू आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग पार्टनर्स. पार्टनर्स की अगर आप बात करें तो इट्स नॉट लाइक अ वेंडर. वेंडर से क्या मुराद है? वेंडर रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप ये था कि आई एम अ मैन्युफैक्चरर एंड आई हैव वन सप्लायर. उस सप्लायर के साथ मेरी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है. वेन एवर आई एम प्लेसिंग एन ऑर्डर, ही इज प्रोवाइडिंग मी द रिक्वायर्ड यूनिट्स अंडर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट scenario. Let's say wholesale price contract ही है, assume कर लें for simplicity. तो I am telling him the quantity or the raw material which I require, and at the same time that retailer after some time, एक arm's length transaction है, after some time, after some lead time, he is providing me with the supplies, and this is going on and on and on. ये conventional relationship है, channel relationship है. Vendor वो एक ऐसी supplier is such that he is not involved in the internal decisions of my manufacturing. But when you say supply chain collaboration, तो channel members would actually become partners. जब आप partners बनने की बात करते हैं तो वहां पर there would be information sharing regarding different items.
डेल के केस को हमने डिस्कस किया था, वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री। लेट्स से आपके पास कोई ऐसा सप्लायर है जो कि एक्सक्लूसिवली अब आपके लिए प्रोडक्ट्स बना रहा है, आपके लिए सप्लाईज और रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, एंड he is actually becoming a partner in a sense that he is sharing his information regarding the production with the manufacturer, and manufacturer at the same time real-time information for some orders are actually shared with that supplier. So what is happening, actually they have become a supply chain partner and a supply chain collaboration has been done. वो एक पार्टनरशिप या कोलैबोरेटिव सिनेरियो क्रिएट हो गया। At the strategic point of view, strategic alliance एक अगर आपने create करना है तो that would represent an alternative that may imply even greater involvement than the partnership. Collaboration से भी आगे आप चले जाएं तो dynamics is such that every information of one partner would be shared with the other one, real time information. That is possible through the use of information technology. Information technology has made it possible that the real-time information of one partner would be shared with the other one. Now this is at the greater level. Her information, not regarding those orders only. It would be involving each inventory positions क्या है, suppliers कब चाहिए होंगी, वो सारी information supplier के पास है, और इसी तरह simultaneously supplier की जितनी information है that would be with the manufacturer. That would be something like strategic alliance. Now let us look at this figure for understanding this thing. It is starting from transactional, which is arm's length, then collaborative, then strategic, which is actually relational. So relational की जब आप बात करते हैं तो that means कि dependency has been created. Partners become dependent upon each other. So we are starting with vendor. Vendor एक traditional scenario. Supplier, manufacturer सिर्फ contract में है, उस order के लिए अपने information को share कर रहे हैं. Then it becomes partner. अपनी real time information for some orders has been shared. कोई information hiding scenario नहीं है. Incentive या discount लेने की कोशिश नहीं की जाएगी. Then afterwards there is the new paradigm, which is the strategic alliance. Dependency इतनी हो गई कि exclusively they are working with each other and they are sharing each and every information of their organization with the other one. So different intensity of involvement actually is involved in the logistics relationship, and it actually depends upon the dynamics of different firms, that how would they actually cope with it, whether they would be in the traditional scenario, that is the transactional one, vendor scenario ही आपके पास मौजूद है, independent players ही हैं, या collaboration create की गई है, और even अब strategic alliances की तरफ भी जाया जा रहा है. Thank you.